I am Dr.Ashok Kumar, Department of Zoology, Ganga, Singh, and Ganga Department of Zoology and Industrial Fish and Fisheries, Ganga Singh College, Chapra, running under Jap University. Now I am going to deal with the marine mussel farming. How marine mussel is farmed or cultured. So it is going to be explained in this topic. The mussel is that is a bivalve, and it is cultured in the coastal water as well as in the estuaries, and the two varieties that is Parna viridis and Parna indicus. Parna viridis is known as green mussel, and Parna indicus is known as brown mussel. So Parna viridis is very much rarest, very much important, that is, and in comparison to Parna indicus, and it's for its culture, it was cultured in very huge amount, in very large amount, and that was 4,500 tons in the year 2005. It is cultured in rocky inshore area, mostly in Kerala coast, as well as in Kerala, and also in Karnataka, some portion of Karnataka coast, and also some portion of Tamil Nadu, and in Karnataka coast it goes up to the west coast, up to Gujarat, and hence it is very important. So in its culture there are 4 steps. First is site selection. Second is site selection. Second is fish farm construction, fish farm structure construction, and third is seeding, and fourth is harvesting. Now I am explaining one by one. Site selection. First is site selection. In site selection, we have to take in consideration where planktons should be in abundance, so that the seed of mussel have more feed for them for growing themselves. And the second is they should be free from the strong wave action, and in salinity it should be 30 to 35%. In such, and so it does not where there is a less navigation and fishing. Hence, the following things are important taken into consideration for site selection. That is high plankton. First thing is high plankton production should be there. Second is current should be slow, not fast. Very water current should be moderate, not very fast, and no strong wave should be there. Water should have less silt load. Water में silt load नहीं होना चाहिए, and pH should be 7 to 8.5. Dissolved oxygen should always be more than 3.5. Next is adequate seed availability in nearby sites, and next is ready market for sale immediately of the produce. Sale of the produce market should be nearby, and area free from toxic algal blooms or industrial pollutions. These things should be taken into consideration. Second is the farm structure. Here 3 methods have been employed. 3 methods are used. First is rack method, second is long line method, and third is
raft method, raft culture. So three on the basis of the three types of culture: raft culture, long line culture, and rack culture. Rack culture, first is rack culture. Rack culture is suitable for estuaries and shallow seas. Bamboo or casurina poles are driven into the bottom at 1.2 meter apart and are connected horizontally with poles. The horizontal poles should be above the water level at high tide. It means one pole is here, one pole is here, one pole is here, and they should be horizontally tied. And on this racks are kept, and over the rocks the spats or seeds. Spat is also known as seed. That is seed means seed of mussel. Seed of mussel means trochophore larva. First of all, after metamorphosis, the seed is formed by external fertilization from both male and female mussels, and the trochophore larva, then veliger larva, and this veliger larva that becomes attached by biceps thread with the hard rocky place where it remains attached, and by scratching these spats or seeds are collected by the persons. They are collected, and then now they are kept on racks, and in this way, the rack method we culture the. Second is long line method. Long line method is simple, very simple, where a long line means a long here upper portion is upper in water, in sea water, in coastal water. The upper there should be a rope. That rope should be of up to 20%, 20 to 25, 15 to 20 millimeter mm thick, and that remains connected with the float. फ्लोट मीन्स ऊपर से फ्लोट बांधा रहता है, बैरल और फ्लोट जो वह ऊपर रहेगा, और नीचे दो जगह पर दैट रिमेन्स अटैच विथ ए सिंकर. वहाँ सिंकर रहेगा जो फ्लोट. तो उसी मेन स्ट्रिंग जो है, मेन रोप है, इस मेन रोप में जगह जगह पर क्वायर्स हम लोग डाल देते हैं, और उस क्वायर्स में ही स्पैट को हम लोग डालते हैं, फंसाते हैं. जो या अब उधर से जब करंट हल्का सा आएगा तो अपने साथ दैट ब्रिंग्स diatoms as well as other phytoplanktons on which these spats or seeds, that is veliger larva, and these spats they depend for feeding on those diatoms and other phytoplanktons. Then is raft culture. Raft culture is very ideal for open sea with relatively low wave action and current that is rectangular. Rectangular means this way, this way, this way, this way, and this way, this way, this way. Bamboos are formed, and from each bamboo at a distance of 0.5 meter, ropes are tied. These ropes are on these ropes, in these quads, the spats or seeds are positioned so that they get feed in the form of phytoplankton from the seawater, and they grow themselves.
The rafts are made by made in rectangular form by bamboo poles and teak poles, and they measure about 16 to 25 meters. 16 लंबाई 25 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर, 16 into 25 meters in size, and they, with a buoyed with a float on the upper side, upper side. Third is seed collection. Mussels seed collection में हम just I had already mentioned that by scraping from the substratum, the seeds are procured, collected, and then second is that is mussel seeding. Young mussels 15 से 25 mm साइज के होते हैं, which are used as they are seed materials हैं for grow out culture. तो यह जो भिन्न ऐसे और इस बीच में बैम्बू है, ऐसे बैम्बू है, उससे क्वायर के रोप्स वो निकल रहे हैं, उसी पर या उस रोप जो निकल रहा है उस रोप पर ही हम उसको भी वो स्पैट को डालते हैं और वो स्पैट अपने बाइसेस थ्रेड से वो चिपक जाते हैं और after sticking with the coir ropes, they take their feed from the diatoms and other phytoplanktons coming along with the ocean current, coming along with the moderate ocean current, and they grow their size. One string, that should be there should be one string should carry at maximum up to 1 kg of spats. अब है जो ग्रो आउट मैनेजमेंट हम लोग कैसे करते हैं, तो यह तो वो जो राफ्ट है, राफ्ट से जो स्ट्रिंग निकला हुआ है, क्वायर रोप जो नीचे की ओर जाता है ना, उसमें वो उसमें हम लोग मान लिया 25 स्क्वायर मीटर का अगर है तो उसमें 100 सीडेड रोप्स उसमें रहेंगे. 25 स्क्वायर मीटर में उसमें 100 रोप्स रहेंगे और ये रोप्स जो हैं सब में सीड्स होंगे, स्पैट्स होंगे. तो यह जो है या 5 से 8 मीटर या और रोप्स जो हैं सो सस्पेंडेड होते हैं उस राफ्ट से उसी पर उस ये राफ्ट है, मान लिया यह राफ्ट है या इस ढंग का, और इसी से लटका हुआ रोप्स हैं. तो इस रोप्स पर वो सीड जो है वो रहते हैं और राफ्ट जो है वो दूरी एक स्ट्रिंग रोप क्वायर की दूरी दूसरे से वो 0.5 मीटर की दूरी पर ये हुआ करते हैं. तो अंडर ओपन सी कंडीशन mussels reach harvestable size in 3 to 4 months. Now they get their feed, phytoplankton, and now they grow themselves, and in 3 to 4 months they become harvestable, and and their growth they may grow more, but after 4 months we harvest these things. So after in a period of 3 to 4 months, the Parna viridis or Parna indicus, they are harvested from the ropes, and it is up to, and the yield has been found to range between 20 to 19 to 23 kg per square meter, per square meter or per meter of rope. In one rope it is per meter of rope in commercial farms of North Kerala. The number of mussel ropes per farm varies between 300 to 900, with the yield
with the yield if ranging from 28 to 40 tons depending upon the initial stocking. हम लोग कितना उस रोप में कितना स्पैट डाल पाते हैं और उसी पर ये हुआ करता है. नाउ हार्वेस्टिंग. अब हार्वेस्टिंग जो है कैसे करते हैं, तो फार्म मसल्स जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, तो रोप्स को पानी से सीधे, वो तो इस ढंग से बना हुआ है, ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे बैम्बू से, और उससे बंधा हुआ है हर आधे मीटर पर एक एक रोप है. तो हम पूरा इसको उठा लेते हैं, पूरे राफ्ट को हम उठा लेते हैं. उठा लेने के बाद है ना, अब उसमें से दीज आर वाश्ड. अब उसको रेप्स है ना, तो बाय लिफ्टिंग द रोप्स फ्रॉम वाटर, पानी से अब उसको उठा लेते हैं. एंड दीज आर वाश्ड, और उसको वॉश कर देते हैं. और तब उसको हम डीप्यूरेशन और ए प्रोसेस ऑफ purification by which mussels are rendered for mussels are become free from harmful materials. Washing के बाद वो सब चीज जो उसके साथ वेस्ट है वे सब निकल जाते हैं. And depuration can be done simply by starving the valves in clean and filtered sea water और ब्रैकिश वाटर. उसमें हम उसको डाल देते हैं. उससे प्यूरेशन के लिए या उसको सिंपली बाय उसको अब स्टार्विंग द बाइवाल्व्स, उसको खाना नहीं देते हैं, उसको डाल देते हैं बाय इन क्लीन एंड फिल्टर्ड सी वाटर और ब्रैकिश वाटर में. और इस ढंग से हमें एक एक हमें नंबर ऑफ है ना, इससे हमें हार्वेस्टिंग हो जाती है. एंड द नंबर ऑफ म्यूजल्स वेरी बिटवीन 300 to 900 with the yield ranging from 28 to 40 tons and depending upon the initial stocking. जितना हम स्टॉकिंग करते हैं उससे तो यह और कुछ नहीं है. इधर यह चारों तरफ से रेक्टेंगुलर, एक ऐसे फिर एक ऐसे फिर एक ऐसे फिर एक ऐसे बांस बैम्बू टिक्स इसको बांध देते हैं. फिर ऐसे 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 उसके ऊपर बांस, फिर बैम्बू फिर आगे पीछे ऐसे 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 करके है ना. तो अब सब में हम क्वायर रोप्स को लगा देते हैं और वो एक क्वायर रोप सबसे लटकते रहते हैं. हर आधे 0.5 मीटर के डिस्टेंस पर उसको डालते जाते हैं. और वो जैसे ही और वहाँ पर स्पैट लगा देते हैं. स्पैट मतलब सीड, मतलब भेलीजर लार्वा जो है वो अपना बाइसस थ्रेड निकालता है जिससे वो चिपक जाता है उससे. और फिर उसको डाल देते हैं. और जो पानी जो सी वाटर का करंट आता है, हल्का सा करंट आता है, उसके साथ डायटम्स और अदर फाइटोप्लैंक्टन से आते रहते हैं, जिसको यह भेलीजर लार्वा वो खाता रहता है और खाकर वो ग्रेजुअली बढ़ते जाता है और अल्टीमेटली एक अच्छा प्रोडक्शन हमें मिल पाता है. दिस दैट. थैंक यू. पहले